सो इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या स्टार्ट किया था? मल्टीपल रूट्स। क्या होते हैं मल्टीपल रूट्स? यस भूमिका, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल रूट्स? नव्या, व्हाट डू यू Ma'am, मीन बाय? simple root is x is equal to 2, but multiple root is if an equation is giving more than one root. So x is equal to 2 minus 2, etc. Yes. So multiple roots means a simple root. If I can write a function f of x, that means if alpha is the multiple root, if alpha is the multiple root, if alpha is the multiple root with multiplicity m of f of x, then अगर मेरा अल्फा जो है, दैट मीन्स जो मैं अपना अल्फा लेके चल रही हूँ, अगर वो मेरा मल्टीपल रूट है, मैं मल्टीपल रूट उसको कब कहूंगी? इफ आई कैन राइट एफ ऑफ एक्स इन सच अ फॉर्म दैट इट कम्स आउट टू बी एक्स माइनस अल्फा रेज़ टू द पावर n फाई एक्स, दैट मीन्स अदर फैक्टर्स, ये जो फैक्टर है कुछ भी हो सकता है, बट जो मेरी अल्फा के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो जो मेरा अल्फा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? x माइनस अल्फा, उसका फैक्टर एफ एक्स में हमेशा इस तरह का आएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डन 2 एग्जाम्पल्स, वन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाज गिवन टू यू x माइनस 2 होल स्क्वायर into x minus 3. You have this function here. This is your phi of x. I'm talking about the root 2. Fine. So here this 2 is my root and this is my multiple root. Why? Because here the multiplicity is my having 2. This is my multiplicity. So this is a multiple root and here x minus 3 is only one factor. Here 3 is my simple root. So you can check, this is because this is factorized and you can see from here that x minus 2 is occurring 2 times, that it has a factor raised to the power 2 and it has only one factor. But if it is not in the factor form, you can also check it by your this function, that if you have alpha is the multiple root, then at the multiple root अल्फा एफ अल्फा भी क्या होगा? 0। एफ डैश अल्फा भी क्या होगा? 0। एफ डबल डैश अल्फा भी क्या होगा? 0। अगर आप इसको m माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल करोगे और अल्फा पे चेक करोगे, वो भी क्या आएगा? 0। अगर अल्फा की मल्टीप्लिसिटी m है तो mth डेरिवेटिव आपका नॉन जीरो आएगा। यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर एज वेल, that if your f of x is this function, if you check your f dash x, yes, क्या होगा मेरा f dash x? सान्या, yes Sanya, what will be my f dash x? Is very simple, in u into v rule, so this will be your 2x minus 2 into x minus 3 and x minus 2 square whole as it is, this will be your 1. तो इसमें अगर आप अपना 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो भी क्या आ रही है आपकी टर्म 0। f2 भी अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ रहा है? 0। f डबल डैश डेरिवेटिव चेक करो x का, तो ये क्या आएगा? दिस इज 2x minus 2 x minus 3 का डेरिवेटिव 1, then this x minus 3 वैसे ही रहेगा, x minus 2 का डेरिवेटिव 1 plus this derivative, this will be 2x minus 2. Now you can check here this कि अगर आप इस डेरिवेटिव में अपना 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? दिस टर्म इज माय 0 बट दिस टर्म इज माय -6 एंड दिस इज टर्म इज 0, तो आपका डबल डेरिवेटिव 2 पे क्या आ रहा है? -6 विच इज योर नॉन जीरो। इसका मतलब जो
2 है आपका, the 2 is a multiple root और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2. You can check from here. तो आपका 3 था, 3 पे आपका एफ एक्स भी क्या हो रहा है, एफ ऑफ 3 भी आपका 0 आ रहा है जब आप पुट करोगे, बट अगर आप एफ डैश 3 चेक करोगे, इसमें 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस टर्म विल बी योर 0 बट दिस टर्म विल बी योर 1 एंड इट इज नॉन 0. That's why 3 is simple root here and 2 is my multiple root. Clear? Yes, ma'am. So next you have example like if you don't have factor, and it is we have also discussed in the last class that if you have fx is equal to x cube minus 3x square plus x 3x minus 1 and you have to check at the root x is equal to 1. Suppose this is given to you. Now you can check at f1. This your f1 is coming out to be, or if you will substitute 1 over here, you will get 0. Fine. If you find the first derivative, this will be your 3x square. इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 6x प्लस 3. अगर आप फिर इस पे f1 लगाओगे, दैट मीन्स आप f डैश 1 चेक करोगे तो वो भी आपका क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ रहा है 0. इसका मतलब f फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपका वो 0 आ गया. इसका मतलब जो आपका 1 था दैट इज नॉट सिंपल रूट. वो सिंपल रूट नहीं है, इसीलिए वो क्या है मल्टीपल रूट होगा. मल्टीप्लिसिटी आप इस तरह चेक कर सकते हो, आप डबल डेरिवेटिव, फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालो. डबल डेरिवेटिव क्या होगा इसका 6x माइनस 6. फिर आपने इसका डेरिवेटिव अगर चेक किया तो आपका क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव 1 पे भी क्या आ रहा है 0. इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 भी नहीं है. नेक्स्ट वी विल चेक थर्ड डेरिवेटिव. थर्ड डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा 6. अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट भी करोगे 1 तो आपका क्या आ रहा है, दैट इज योर 6 विच इज योर नॉन 0. दैट मीन्स द रूट which you are taking x is equal to 1 is the multiple root. और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, यस 3. इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3. 3. क्योंकि इसका थर्ड डेरिवेटिव नॉन 0 है और इसके पहले वाले सारे डेरिवेटिव 0 है. बट आई हैव टोल्ड यू दैट इफ I have root is a multiple root with multiplicity. I can rewrite my f of x in such a way x minus alpha m, and this is coming out to be a phi of x. So if you will write in this way, but it will be, if you can write, if you can simplify and you can factorize, this is nothing but your x minus 1 whole cube into 1. So here this 1 is your multiple root. This 3 is your multiplicity and this 1 is your phi of x. Is this clear? If your x equal to alpha is multiple root, then you can always write your function in this way. Next, third example for the multiple root. If you have f of x is equal to 1 minus cos of x and you have to check x is equal to 0 is the simple root or multiple root, तो आप सबसे पहले f0 आप पुट करोगे. f0 तो आप इसका मतलब वो रूट तो है 1 माइनस cos 0. cos 0 कितना होता है 1. इसका मतलब 0 रूट है. अब हमने चेक क्या करना है कि सिंपल रूट है या मल्टीपल रूट है. क्या कर चेक करूंगी मैं सिंपल रूट और मल्टीपल रूट के लिए, डिफरेंशिएट करेंगे. differentiate. So you will differentiate. This will be your 1 का differentiation क्या होगा 0 and cos x will be minus sin x. माइनस माइनस कैंसल आउट तो क्या आ जाएगा ये मेरा sin x. अगर मैं इसमें 0 पुट करूं तो मेरा कितना आ रहा है आंसर 0. इसका मतलब जो x इक्वल टू 0 मैं लेके चली हूँ वो मेरी सिंपल रूट है या मल्टीपल रूट है, मल्टीपल. तो f dash is 0 so you have x equal to 0 is multiple root. अब आपने मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है तो नेक्स्ट क्या करोगे, फिर से डिफरेंशिएट करोगे. तब आपका क्या आ रहा है, दिस इज योर cos of x एंड इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे cos 0 कितना होता है 1.
So you have non-zero term over here. F dash is 0, but F double dash 0 is non-zero. That means x is equal to 0 is the multiple root with multiplicity. 2. Yes. क्या होगी इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है 2, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है और उसके पहले वाले डेरिवेटिव मेरे क्या आ रहे हैं 0. Now how you can write this function is in this form. I am saying that if it is a multiple root, you can rewrite your function in this form. So how you can write, I am just telling you that if you have as f of x is your 1 minus cos of x. आपने फॉर्मूला पढ़ा ना 1 minus cos 2 theta. क्या होता है 1 minus cos 2 theta? Yes, rhythm. What is 1 minus cos 2 theta? 2 sin theta. 2 sin theta. Here your theta is 2 sin x. square. तो आपका क्या हो जाएगा 2, yes, 2 sin square x by 2. So can I write this x by 2 whole square and this 2 sin square x by 2 and x by 2 whole square? I am multiplying and divide by the same term. So if you will solve this, you will get as x square into 2 by 4 sin square x by 2 and x by 2 whole square. And if you will solve this, you can write it like x minus 0 whole square. This is equal to half into sin x by 2 and x by 2 whole square. So now you have rewrite your f of x in this way. Fine. Here, this 0 is your root. This 2 is your multiplicity. And this function is your phi of x. Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. So next we are going for Newton's method. Newton's method हमने किया था x is equal to 100 when we have started with x is equal to 100 equal to 0. यहाँ पे मेरी कन्वर्जेंस क्या आ रही थी, बहुत स्लो कन्वर्ज कर रहा था ना वो रूट को. वो क्यों कर रहा था? क्योंकि जो मेरी x is equal to 0 है, that is not my simple root. वो मेरी x equal to 0 मेरा क्या है, मल्टीपल रूट है. ठीक है. और मल्टीपल रूट में यू कैन चेक कि आपकी कन्वर्जेंस क्या होती है. कैसे डिफाइन करते हो x? अगर हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, xn plus 1 xn minus f of xn f dash xn. यही होता है ना आपका न्यूटन्स फॉर्मूला. दिस इज योर न्यूटन्स फॉर्मूला. सो यू कैन चेक फ्रॉम हियर कि जब आपका न्यूटन्स फॉर्मूला होता है, दैट यू रिगार्ड दिस फंक्शन you take it as g function. फाइन. तो आपका g of x क्या होता है, ये होता है ना x minus f of x f dash x. तो अगर आप चेक करोगे fx आपका क्या है, बिकॉज अब आपकी क्या है, fx की मल्टीपल रूट है. ठीक है. अगर मल्टीपल रूट है इसका मतलब आप fx को कैसे लिखोगे, x minus अल्फा इंटू m इंटू फाई ऑफ x. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x minus अल्फा m फाई ऑफ x. डेरिवेटिव क्या होगा इस fx का? yes Arunan, but will be the derivative of this term f of x. अनन्या, क्या होगा मेरा डेरिवेटिव? हाँ जी स्टूडेंट्स, what will be my derivative of this term x minus alpha raised to the power m into phi of x? mx minus alpha raised Yes. to power m minus 1 Yes. phi x Hmm. plus x minus alpha raised to power m और phi x का डेरिवेटिव. Right. So this will be my derivative. If you will solve this term, this will coming out to be your x minus alpha
if I'll take x minus alpha raised to the power m common, so it will be phi of x. This will be my m phi x plus x minus alpha phi dash x. So you can solve it. Now what you can see, आप क्या कहते थे कि यही मेरा gx होता था, तो मैं क्या कहती थी, मेरा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मेरा कब 2 आता है? Yes, Mayank. When will I have order of convergence 2? मैम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 तो Yes, हमने क्या करा था 6 पॉइंट आइट्रेशन में, मेरा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 कब आएगा कि जब मेरा g डैश अल्फा मेरा क्या आएगा 0. तब हमने किया था ना लास्ट रिमार्क, इन द लास्ट रिमार्क ऑफ 6 पॉइंट आइट्रेशन वी हैव डन कि अगर मेरा g डैश अल्फा 0 आता है, g डबल डैश अल्फा भी 0 आ रहा है एंड डिफरेंशिएट करूं मैं q माइनस 1 टाइम्स एट अल्फा वो भी 0 आता है और g क्यूथ डेरिवेटिव अल्फा नॉन 0 आता है, तब मेरा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या था? क्यू क्यू उस केस में. फाइन. तो हमारा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन में क्या आ रहा था? 2 आ रहा था जब मेरा g डैश अल्फा होता है 0. नाउ यू कैन चेक दिस एट g. दिस इज योर g. नाउ g डैश x चेक करो क्या होगा 1 माइनस. कैसे करो इसको आई एम टेलिंग यू द शॉर्टेस्ट वे. इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानो, कंसीडर दिस एज फर्स्ट फंक्शन, this as second function, this as your third function. Fine, you can take it as 1 by into 1 by this as third function. So now you have three function 1 2 and 3. इसका डेरिवेटिव कैसे करते हो 3 टर्म्स का? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? x माइनस अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा? 1. सेकंड डेरिवेटिव एज सेकंड फंक्शन एज इट इज, थर्ड एज इट इज, प्लस इसका डेरिवेटिव x माइनस अल्फा एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा फाई डैश x और थर्ड फंक्शन एज इट इज रहेगा. थर्ड में क्या होगा? x माइनस अल्फा एज इट इज रहेगा, फाई x एज इट इज रहेगा और थर्ड का क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव. आई एम जस्ट राइटिंग थर्ड डैश. फाइन. जब आप इसमें g डैश अल्फा पुट करोगे, g डैश अल्फा, इसमें अगर अल्फा पुट करोगे ये तो आपका क्या रह गया 1 इंटू क्या हो जाएगा फाई अल्फा इंटू इसमें पुट करोगे अल्फा तो क्या हो जाएगा 1 m टाइम्स फाई अल्फा plus alpha minus alpha is 0. Is it clear how I have written this? I have just substituted alpha. Clear or not? मैंने क्या किया है, ये डेरिवेटिव टर्म ये मैंने अपनी क्या निकाली है? डेरिवेटिव निकाला है 1 सेकंड और फर्स्ट सेकंड और थर्ड का, और यहाँ पे मैं अल्फा पुट कर रही हूँ डेरिवेटिव में, तो यही आएगा 1 एज इट इज. सेकंड में मैंने पुट क्या किया? अल्फा पुट कर दिया. थर्ड में मैंने अल्फा पुट किया तो क्या हो गया? m फाई अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा विल बी 0 एंड फाई डैश x. So this will be my this term. Clear or not? Should I repeat? Please repeat it again. Navya, you are not audible. Are you saying it? I'm clear. Should I repeat? No, ma'am. Okay. मैम So when you will substitute alpha in the second term, this will be alpha minus 0. I will get alpha as 0. This is alpha minus 0. This is as 0. So what I will have? This is 1 minus 1 by m. Is this I am getting phi alpha will cancel out. So here your m is not 0. M is not 1. That means it is non-zero. So what you got? Here you got g dash alpha is non-zero. That means your convergence is not quadratic. Is this clear? Why we were having the problem in you calculating x raised to the power 100 equal to 0?
although Newton's method has quadratic convergence at least. हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही थी? क्योंकि जो मेरा x इक्वल टू 100 था इक्वल टू 0, उसमें मेरी रूट क्या थी? मल्टीपल रूट थी। और मल्टीपल रूट के लिए आप चेक कर सकते हो, आपका g डैश अल्फा मल्टीपल रूट पे आपका क्या आ रहा है? नॉन जीरो। नॉन जीरो आने का क्या मतलब है कि आपकी कन्वर्जेंस जो है वो लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक नहीं है। इसीलिए x रेज टू द पावर 100 में आपकी जो कन्वर्जेंस आ रही थी वो बहुत स्लो आ रही थी। Clear this point? Yes, ma'am. Fine. So what we can do now, we can modify our formula, that you can say your modified Newton's method. Modified Newton's method, or you can say method, Newton's method for, or you can say this is your Newton's method for multiple roots. फाइन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वी कैन डिफाइन, वी कैन मॉडिफाई आवर फॉर्मूला xn+1 मेरा क्या होगा? आई विल हैव xn+1 इक्वल टू xn माइनस, here I will multiply the multiplicity. मैं मल्टीप्लिसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? fxn से, और उसके डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो आपकी m है, दिस इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट। फाइन, ये आपकी मल्टीप्लिसिटी है। तो इस केस में आप अपना g चेक, यहाँ पे ये अब आपका g बन गया ना। नाउ दिस इज योर g, तो आपका gx क्या बन गया? x माइनस m इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ डैश है। एफ ऑफ एक्स वही आपका मल्टीपल रूट है, तो हमेशा इसको आप कैसे लिख सकते हो? m इंटू एक्स माइनस अल्फा m इंटू फाइव एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव हमने ऊपर लिखा था ना, x माइनस अल्फा m माइनस 1 फाइव एक्स प्लस x माइनस अल्फा m फाइव डैश एक्स, और हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म करने लिखा था, तो ये मेरा क्या बनेगा? x माइनस अल्फा फाइव एक्स अपॉन m इंटू फाइव एक्स प्लस x माइनस अल्फा फाइव डैश एक्स। तो आप देख सकते हो ये जो आपका आ रहा है, दिस थिंग, your this thing is just matching with the previous one. तो आपका यही आ रहा था ना प्रीवियस में भी। this is your this thing and x minus alpha phi x here, but when you have modified the method, but you have only m multiplication, m is there, so जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, g डैश अल्फा हमने ऊपर निकाला था ना, g डैश अल्फा पे जब हम चेक करूंगी तो मेरा ये तो 1 आ जाएगा। जब मैंने चेक किया था m मल्टीप्लाई नहीं था, तो मेरा क्या आ रहा था? 1/m। तो इस केस में आप चेक कर सकते हो कि वो क्या आ जाएगा? m इंटू 1/m, जो कि आपका 0 आ गया। इसका मतलब कन्वर्जेंस इज एटलीस्ट क्वाड्रेटिक। क्लियर? कि अगर आप पिछले वाला मेथड यूज करोगे मल्टीपल रूट के लिए, दैट इज योर x सिंपल मेथड, दैट इज योर xn+1। if you use this iteration method for multiple root, you will have convergence linear, that means your convergence is slow. But if you use this method, this xn minus m times f of xn, so here you can see आपकी convergence क्या आ रही है? Quadratic. Is this clear? At least quadratic. Even अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालो किसी भी रूट पे, तो आपका वो भी 0 आ जाता है। तो आपका क्या होगा उस केस में? आपका क्या आएगा? क्वाड्रेटिक से भी, दैट मीन्स थ्राइस उसकी वो मतलब क्यूबिक उसकी कन्वर्जेंस हुई। तो मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द डेरिवेटिव। इज इट क्लियर?
कि क्यों हमारा x रेज टू द पावर 100 इक्वल टू 0 क्यों स्लो कन्वर्ज कर रहा था। समझ आ गया ये पॉइंट? यस और नो? Yes, ma'am. Fine. So is this clear now? Sometimes it is possible that you know the root is a multiple root, right? But you do not know the root. Suppose this is a remark or you can say some point. What happens sometimes that you don't know the root. You don't know root. You neither know the root nor its multiplicity, fine? You neither know the root nor its multiplicity. अब इस केस में क्या है, यहाँ पे जो आपको आप चेक कर रहे थे अल्फा, आपको पता चल रहा था कि अल्फा मेरा जो है वो मल्टीपल रूट है और उसकी मल्टीप्लिसिटी भी हम कह रहे थे m है। पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको जो इक्वेशन दी है उसमें आपको ना पता चले कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, मल्टीपल, मतलब बस ये बता दिया जाए कि हाँ इसकी मल्टीपल रूट है, पर आपको रूट नहीं पता, वैल्यू नहीं पता उसकी क्या है और ना ही उसकी मल्टीप्लिसिटी पता है। तो उस केस में आप क्या अपना फॉर्मूला यूज करोगे? इन दैट केस यू यूज द फॉर्मूला xn plus 1 is equal to xn minus f dash. This is to remember. Otherwise, you have to write f of x and f dash xn. This is for remembering. This will be your f dash square minus f into f double dash. If you don't know your root and know its multiplicity, then you can go with this, because sometimes it's not possible to find the multiplicity of the root. Fine. And suppose the question is only given that it has multiple root, then you have to go for this formula. Actually, what we doing, like we are defining gx for the multiple case. I am defining g of gx minus m fx and f dash x. So in this case, but actually we define mu of x as f of x and f dash x. So if your f of, in this case we are not going for the proof. इस केस में अगर आपका अल्फा जो है वो मल्टीपल रूट होता है एफ एक्स का, बट वो म्यू एक्स का इस केस में क्या आ जाता है, सिंपल रूट आ जाता है। तो हम जी एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं इस फंक्शन से, एक्स माइनस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय म्यू डैश एक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका यही फॉर्म बनेगा, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ एफ डैश डिवाइड बाय एफ डैश स्क्वायर माइनस एफ एफ डबल डैश। इज दिस पॉइंट क्लियर कि कब आपको फॉर्मूला यूज करना है, एक्स एन माइनस एम एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय डेरिवेटिव एक्स एन, और कब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है? क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes or no? We will see examples of this so that you can do practice of these type of questions. So what you have now over here, suppose it is given to you, the question is given to you. पिछला सारा concept clear हो गया ना? Now we have 3 formulas for x, Newton. xn plus 1 is the xn minus f of xn डिवाइड बाय एफ डैश एक्सएन। ये मैं कब लगाऊंगी फॉर्मूला? जब मेरा क्या है, जब मेरी रूट क्या होगी, सिंपल xn plus 1 equal to xn minus m xn f dash xn। ये मैं कब लगाऊंगी? जब मेरी रूट क्या होगी, multiple root and I know its multiplicity because m is identifying here your multiplicity, or xn plus 1 equal to xn minus f. Navya, are you saying anything? Ma'am, if the multiplicity is not given but we can easily find it, then also we can use the second formula. Yes, you can also use that formula.
If the multiplicity is not given to you and you can find the multiplicity easily, then you can go for this formula. If suppose like x, this equation is just simple equation x raised to the power 100, from here you can say the multiplicity is 100. But sometimes it is very complex equation and you calculate your 50th derivative and it is coming out to be 0 and you go for more derivatives. आप कब तक check करोगे? You will stop somewhere. तो अगर आप ऐसा नहीं, आप मल्टीप्लिसिटी बहुत आपने एफर्ट्स कर लिए, बहुत आइट्रेशन के बाद भी आपको मल्टीप्लिसिटी नहीं पता चल रही, then you can go for this formula, that is f dash divided by f dash square minus f into f double dash. So yes, but keep it in mind, ये आपने याद रखना है कि अगर आपका सिंपल रूट है then it is better to apply your Newton method. आप आंसर आपको मल्टीपल रूट से भी मिल जाएगा, बट यू कैन सी कि मल्टीप्लिसिटी के लिए आपको एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे और आपकी कंप्यूटेशन जो है वो ज्यादा होंगी. क्लियर? क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग जो सब सो रहे हैं. So please keep it in mind whenever you are applying your Newton's method. If it is a simple root, you go for simple. Otherwise, these are for multiplicity. So if you have a function f of x equal to ex minus x minus 1, you have to show that f has a zero of multiplicity 2 at x is equal to 1, and show that Newton's method with x not equal to 1 converges to this 0 but not quadratically. Fine. So यहाँ पे अगर आपको कहा जा रहा है f has a 0 और f has a root, इसका मतलब एक ही है. 0 हम रूट्स को जीरोस भी बोल देते हैं. फाइन. या आपको जीरो कहा जाए या रूट कहा जाए, दैट हैज द सेम मीनिंग. अब वो आपको क्या कह रहा है कि फंक्शन मेरा क्या है, e x minus 1 और मल्टीप्लिसिटी कितनी आनी चाहिए 2. किसकी मल्टीप्लिसिटी आनी चाहिए? 1 की. आपने शो करना है कि अगर आप न्यूटन मेथड सिंपल वाला मेथड लगा रहे हो वो आपका कन्वर्ज तो करेगा रूट को. दिस 0 मींस रूट. इट इज नॉट, this is not this 0. No, it is talking about the root, that it will converge to the root, but converge करेगा पर वो quadratically नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उस केस में हमारा मल्टीपल रूट आ रहा है. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिसिटी शो करने के लिए? मेरा f of x क्या है? ex minus x minus 1. How I will start with multiplicity? Derivative. आपने पहले चेक किया कि क्या रूट पे वो 1, क्या 1 इसकी रूट है भी है कि नहीं. तो आप चेक कर सकते हो f1 that will e raised to the power f of, sorry, here it is x is equal to 0 converges to x is equal to 0 and you have to check for 0. f0, if you can check, this is coming out to be e raised to the power 0, that will be 1 and it is coming out to be your 0. Next you will go for the derivative. Derivative आपने चेक किया, क्या होगा e raised to the power x का derivative? E raised to power x. X derivative is 1. So if you check at 0, it is coming out to be 1 minus 1, that is 0. इसका मतलब 0 जो है आपका मल्टीपल सिंपल रूट नहीं है और वो मल्टीपल रूट है. डबल डेरिवेटिव भी क्या है आपका ex. यहाँ पे चेक किया आपका क्या आ गया 1, विच इज योर नॉन जीरो. इसका मतलब जो मेरा x इज इक्वल टू, the point here is x not equal to, I have to take the initial approximation 1 and the root is 0.
So the x is equal to 0 is multiple root with multiplicity. क्या है इसकी multiplicity? 2, क्योंकि आपका डबल डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो आ रहा है. That you have proved first part. I am performing the iterations that you can do yourself. I am just writing the answer for the Newton's method and your modified Newton's method. Now, if I am writing here number of iterations, fine, these are my number of iterations. This is my xn in case of Newton's method. And this is my modified method. This n is your 2 here. Fine. So if you are applying simple Newton's and if you are applying modified. Fine. So at the 0th iteration, what is your xn? X0 is 1, modified also 1. When you perform your first iteration, your Newton's method is giving you answer 0.58198. At the second iteration, it is giving me answer as 0.31906. You can do it yourself, just substitute the value in this equation, in the function and its derivative. Third is, it will be your 0.16800. At the fourth iteration is 0.08635, and at the fifth iteration you got 0.04380. Sixth iteration 0.02206. Seventh iteration you got 0.01107. Eighth iteration, if you do it, you will get 0.005545. Ninth iteration, if you perform, it will give you answer as 0. It is written something that floating point. This is 2.7750 into 10 raised to the power minus 3. 10th iteration you got 1.3881 into 10 raised to the power minus 3. 11th iteration you got 6.9411 into 10 raised to the power minus 4. 12th iteration you got 3.4703 into 10 raised to the power minus 4. And 13 iteration you got 1.7416 into 10 raised to the power minus 5. Now if I do the iterations of modified method, in the first iteration if I substitute in the xn plus 1, xn minus 2, ex minus x minus 1 divided by the derivative ex minus 1, I am getting here answer is 0.16395. The second iteration I am getting at 0.0044781. Third iteration 0.000003422. So you can see from here that at the third iteration you got your 5 at 5 place decimal places you got 0. So this answer is approximately, if I am saying this is 0, because at this point your f of x will become 0. So you can see from here that at the 30th iteration you got this type of answer, and even this is your up to 4 decimal places you have 0, because this number is becoming 0.00007174116. That means you have performed 13 iterations. Still your answer with the Newton's method modified is more closer towards the root. Is this clear? Yes or no? That means here the convergence is slow
इन द न्यूटन मेथड। वो कह रहे थे ना क्वाड्रेटिक नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक होती तो यू कैन ऑल्सो चेक कि आप किसी भी आइट्रेशन पे लेवल निकालो E2/E1, इवन इन द सेकंड पे ही निकाल लो, वो चेक करो E3/E2 और पावर p निकालो, तब एरर यहाँ पे निकाल लो हर आइट्रेशन पे। nth आइट्रेशन आपका क्या होएगा, xn+1 माइनस xn। जो आप एरर निकालोगे वो आप निकालो हर आइट्रेशन पे, तो आपका क्या होगा, ये यहाँ से कैलकुलेट करोगे p तो वो आपका क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा होगा, इसलिए वो कह रहा है यहाँ पे यू कैन सी यू हैव परफॉर्म लॉट ऑफ आइट्रेशन एंड टिल एट द 13th iteration you got this answer, but with the Newton method आपको कहाँ पे थर्ड आइट्रेशन पे ही आंसर मिल गया, up to 4 decimal places you got 0। clear? Yes or no? Yes, ma'am. Right? Is it clear to all or all clear? Clear to all, Not ma'am. be all clear, it should be clear to all, right? So if you have suppose example f of x is equal to your x cube minus 7x square plus 16x minus 12, you have to apply Newton's method for multiple roots, and you have to start your initial approximation is given to you 1. So here the root is not given to you, so how, if you find the derivative also, how you will check that is it 0 or not? That means you have to find the root first. It is the cubic equation, it can be your 5th degree equation, and suppose I have x5 minus 7x square plus 4x minus log of x, this type of equation, and I know suppose I say this has multiple root तो है इसका, पर मुझे नहीं पता रूट क्या है, तो आप क्या करोगे इस केस में, ना तो आपको मल्टीप्लिसिटी पता चल रही है, ठीक है, और आपको रूट भी नहीं पता, तो आप मल्टीप्लिसिटी फाइंड कैसे करोगे? तो इस केस में आप यू कैन गो फॉर योर सेकंड फॉर्मूला, आपका xn+1 क्या कहता है, xn माइनस f डैश स्क्वायर माइनस f डबल डैश, राइट? तो इस केस में यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला, और आपको x0 आपको पता है 1 है, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टेप क्लियर हो गया कि मैंने यहाँ पे क्यों फॉर्मूला ये वाला नहीं लगाया? Yes, ma'am. Clear. Right? So because at this step I don't know the multiplicity and I am not able to find the multiplicity because I don't know the root. Right? So in this case, if you start with this x0 equal to 1 and you apply this formula, you are getting x1 is equal to your 2.111, x2 is equal to, you are getting 2.0078, x3 you are getting 2.00003. So that means if you are checking, so you can go for the more accuracy, you want number of digits. So this is, I am saying here, this is my approximated root. Fine. Next example. If you have equation f of x, if you have x minus 1 square log of x, and the root is given to you that the root is your alpha. So here it has multiple root if it is given. So here now you know the root, then you can find your multiplicity and then go by with formula xn plus 1 xn minus f xn, because it requires less computation than your double derivative and involving square term. So here you can check your f of alpha is coming out to be your 0, f of f dash x, when you will find its derivative, it will be 2x minus 1, log x will remain as it is, then x minus 1 whole square, the derivative of log x, that will be 1 by x, and if you will evaluate it at 1, it is coming out to be 1, you substitute here, 1 you substitute here, you will get
0, दैट मीन्स 1 जो है आपका वो मल्टीपल रूट है, वो सिंपल रूट नहीं है। नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे मल्टीप्लिसिटी के लिए? एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या करोगे? ये यू इंटू वी बड़ा, क्या होएगा इसका डबल डेरिवेटिव? यस अगम, अनन्या, अमनदीप, बट विल बी द डेरिवेटिव पढ़ा है ना +2 में? मैम 2 2 ln x प्लस 2x minus 1 into 1 by x। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अगेन यू विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल हियर। क्या होएगा? 2x minus 1 1 by x as it is plus x minus 1 square as it is, derivative of 1 by x will be minus 1 by minus 1 by x square। अगेन अब आप इस पे चेक करोगे f डबल डैश 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, log 1 is 0, this term 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, so you got 0 over here। इसका मतलब 1 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 भी नहीं है। नेक्स्ट मल्टीप्लिसिटी के लिए आप क्या फाइंड करोगे? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 by x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फाइन, क्या होगा इसका? +2 इंटू इसका डेरिवेटिव x minus 1 is 1 इंटू 1 by x as it is, प्लस 2 इंटू x minus 1 as it is, डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी -1 by x square, प्लस यहाँ पे अगेन दोबारा लगाओगे, वैसे ये सेम ही थे, तो आई कैन राइट ओवर हियर एज 4, फाइन, दिस 2 and 2 will be added because this is x minus 1 and x, प्लस यहाँ पे लगाओगे, क्या होगा आपका? 2x, this will become your x minus 1 by x cube minus 2x minus 1 by x square, you can check, fine। So आप इस पे पुट करोगे 1, this term will be your 0, this term will be your 0, this term will be your 0, but here you have got 2 plus 4 equal to 6, which is your नॉन जीरो। इसका मतलब मेरी मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई? 3। तो मेरा x जब 0 है इज द मल्टीपल रूट, आई एम जस्ट फिनिशिंग, देन यू कैन ऑल लीव, आई एम जस्ट फिनिशिंग इट, फाइन। सो दिस हैज मल्टीप्लिसिटी रूट एंड इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3, fine। So you can go with this formula, xn plus 1 xn minus 3 times fxn f dash xn, और x naught आपको initial approximation, if you start with your initial approximation 0.5, then you will get first iteration you have got 0.9357, x2 you will get 0.9993, and at x3 you will get 1. So that means you have achieved your root more faster than your Newton's method. You can also go for, suppose like if question is given to you, f of x is given to you, this is the last time not solving it, that you can do yourself, x cube plus 4x square minus 10 equal to 0, fine। अब आपको इसका रूट दे दिया कि इसका रूट जो है मेरा अल्फा जो मेरा आ रहा है अप्रोक्सीमेटेड इतना ही है 1.365230001 जो है वो मेरा रूट है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं कह रही हूँ कि रूट है, सिंपल रूट है, तब आप लगा तो अपना मल्टीपल वाला फॉर्मूला भी सकते हो, xn plus 1 xn माइनस एफ एक्सएन लगाओ, एफ डैश एक्सएन लगाओ। मल्टीपल वाले में मल्टीप्लिसिटी तो इसकी है नहीं, या मुझे पता नहीं, या मैं चेक नहीं कर सकती, तो या मैंने ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकती, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि वो मल्टीपल रूट नहीं है, सिंपल रूट है, तो यू कैन सी कि इसमें आपकी कितनी ज्यादा कंप्यूटेशन होगी। अगर आप इस फॉर्मूले के साथ स्टार्ट कर रहे हो और इस फॉर्मूले के साथ कर रहे हो, तो इफ यू स्टार्ट विद x नॉट इक्वल टू 1.5,
तो x3 पे आपको आंसर मिल रहा है इस केस में भी। अगर यहाँ पे भी आप 1.5 के साथ स्टार्ट कर रहे हो, इस केस में भी आपको x3 तक आंसर मिल जाएगा, बट इट हैज मोर कंप्यूटेशन देन योर सिंपल न्यूटन मेथड। फाइन। तो जब आपको पता है कि आपका सिंपल रूट है, यू कैन गो फॉर योर simple Newton method because it will have less computation. So this was all about Newton's method. कोई doubt है then you can ask. Yes students, any doubt? If you don't have doubt, then the students of only group 9 can remain in this meeting, others can leave.